Hello everyone, welcome to Grade Up. So I'm so honored to have Pragya here. Hi Pragya, how are you? I'm fine, thank you, Nivedita. Thank you for calling me here. Right, so guys, Pragya has been a distinguished lawyer in her time. Then she decided to quit practice and she went to Cambridge for her masters. तो इनकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है. इन्होंने क्लैट क्वालिफाई नहीं किया था. शुरू से लेकर अब तक क्या क्या किया है प्रज्ञा मैम ने, आज हम सब कुछ देखेंगे. So ma'am, please tell us about yourself. How did you start? What made you do law and how did it all begin? That can be a long story, and I would be speaking in both the languages. सबकी सहूलियत के लिए, क्योंकि मुझे लगता है जनमानस की भाषा है हिंदी, तो लोगों से इंटरेक्ट करने में ज्यादा इजी रहता है. तो नमस्कार आप सभी को. मेरा नाम प्रज्ञा पारिजात सिंह है, जैसे कि निवेदिता मैम बता चुकी हैं आपको. एंड आई एम ट्रूली ऑनर्ड टू बी ए पार्ट ऑफ दिस ग्रेड अप के साथ यहाँ पे मुझे आने का मौका मिला, और मेरी कोशिश है कि मैं अपना सुझाव आप सबके साथ डिस्कस करूँ. सो आई एम बेसिकली फ्रॉम इलाहाबाद. वो मेरा पैतृक घर है वहाँ पे. और we are three sisters. My father is in government services. My mother is a housewife, and बड़ी अच्छी तरबियत हुई है. और with three daughters coming from a normal semi urban area, upper जो है मिडिल क्लास फैमिली से, हमें हमेशा प्राथमिकता पढ़ाई को दी गई. तो पेरेंट्स ने हमेशा से हमें बोला कि आप पढ़ाई पे फोकस करिए, बिकॉज वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ फंड्स कि हम जो है कहीं और पे कुछ कर पाएंगे. तो इस तरीके के घर परिवार और परिवेश से मैं आई हूँ. एंड टिल 12th आई वाज इन आर्मी स्कूल इलाहाबाद. 10वीं में मेरे जो है 88% आए थे. एंड मैं बहुत पढ़ाई लिखाई वाली लड़की नहीं थी एज सच. आई वाज नॉट बैड, बट आई वाजंट एग्जाम्पलरी अमेजिंग और समथिंग. तो मेरे जो है क्लास टॉप 10 में मैं यूजुअली रहती थी. बट फिर जब जिन स्टूडेंट्स के 90+ आए, तो मैंने देखा कि उनको बहुत स्कूल में इज्जत मिली, और उनको जो है कैश अवार्ड भी मिला. उनको जो है वहाँ स्टेज पे बुला के उनको जो है पूछा जाता था. सो आई रियली थॉट दैट देयर इज समथिंग मोर फैसिनेटिंग अबाउट गेटिंग मोर स्कोर. सो व्हेन आई वाज इन इलाहाबाद, उस समय सिर्फ साइंस और कॉमर्स हुआ करता था. बट वी वर द फर्स्ट बैच जब ह्यूमैनिटीज इंट्रोड्यूस हुआ. तो 88 यूपी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक डिसेंट स्कोरर. हमारे यही बोला जाता है कि अगर अच्छे नंबर आ रहे हैं तो बच्चे को साइंस पढ़ना है, या एट मैक्स ज्यादा रेवोल्यूशनरी होना है तो कॉमर्स पढ़ ले, बट इतने नंबर आने के बाद आप ह्यूमैनिटीज नहीं लेते हैं. सो आई डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू गो फॉर ह्यूमैनिटीज, बिकॉज आई फेल्ट दैट मेरा नीश जो है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ऐसे सब्जेक्ट्स के प्रति मेरी रुचि कहीं ज्यादा महसूस होती थी. सो आई ऑप्टेड फॉर ह्यूमैनिटीज. एंड 12वीं तक इनफैक्ट मुझे याद है कि मेरे कुछ टीचर्स ने आके मुझे डांटा और कहते रहते थे कि अभी भी मौका है, फिर से 11th रिपीट कर लो, साइंस ले लो, क्या कर रहे हो. उस समय कुछ ऐसा विजन नहीं था, कुछ सोचा नहीं था कि क्या करना है. बट कहीं ना कहीं हमारे यहाँ सच इतना कोई ये नहीं है कि प्रॉपर गाइडेंस है या डे 1 से बताया जा रहे हैं कि आपको यही करना है. तो ये सारी चीजें बहुत नहीं थी. बट एक लॉ के प्रति मुझे कुछ हल्का फुल्का फैसिनेशन था. एंड सिंस आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, सो वी हैव ग्रोन अप हियरिंग दैट यूपीएससी की तैयारी करनी है. और पढ़ने में मैं चूंकि डिसेंट थी, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली माय फादर आल्सो इन अ वे एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग्स दैट इट वुड बी नाइसर इफ यू ट्राई समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. सो मेरे बैक ऑफ द माइंड ये चीज थी कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगी, देयरबाय मीनिंग कि आगे का रास्ता कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए खुल रहा था. तो 12th में मेरे अच्छे मार्क्स आए. आई वाज द डिस्ट्रिक्ट टॉपर ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड आई गॉट 93%, व्हिच आई थिंक वाज अ वेरी डिसाइसिव मोमेंट ऑफ माय लाइफ. और फिर बहुत सारे सपनों को बुनकर दिल्ली में मैं आ गई, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा दाखिला हुआ. I did my graduation from Gargi College South Campus, and काफी डिसहार्टेंड थी, क्योंकि सोच के आई थी कि एलएसआर में होगा. बट चूंकि फिजिकल एजुकेशन मेरा एक कंपलसरी सब्जेक्ट था, एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक रेगुलेशन है कि आपके 4% डिडक्ट हो जाएंगे. तो जब मैं दिल्ली आई तो मेरी जो 93% से एग्रीगेट मेरा घट के जो है 4% डिडक्ट हो गए, जिसकी वजह से आई कुडंट मेक इट टू लेडी श्री राम कॉलेज. सो एट दैट पॉइंट आई गॉट गार्गी कॉलेज, बट आई वाज हैप्पी. सब्जेक्ट क्या चूज करना है, तो ऑफ कोर्स आईएएस बनना है, आईएएस की तैयारी करनी है, और ह्यूमैनिटीज से है तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जुम्मा जुम्मा बचता था. सो आई टुक हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस. बीए प्रोग्राम का कोर्स मैंने लिया, जो मुझे लगता है काफी होलसम कोर्स था. उसे बड़ा ही बहनजी कोर्स कहते हैं. उसको एक ऑनर्स का जो वो एलिटिज्म है वो नहीं मैच कर पाता था, बट मैंने डेलिबरेटली ये सब्जेक्ट ऑप्ट किया. And continuously for 3 years I scored the highest with both the subjects. मैं अपने combination की topper थी, साथ में इंग्लिश और हिंदी भी मैंने पढ़ा. तो कहीं ना कहीं हिंदी से भी मेरा राब्ता रहा 3 साल तक, ग्रेजुएशन 3rd ईयर तक भी.
और वो भी बहुत ही अच्छा मेरे लिए एक एक्सपोजर था, बिकॉज कमिंग फ्रॉम अ टिंसल टाउन टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहां हमें आदत नहीं है अपने टीचर्स और प्रोफेसर्स को हाथ में कॉफी के मग लेके और जीन्स पहन के देखने की. सो इट जस्ट चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव. सो इट वाज नॉट जस्ट अ डिग्री दैट आई गॉट बीए के फॉर्म में, बट इन अ वे वो मेरे लिए बहुत ही लाइफ टर्निंग मोमेंट था. बड़े अच्छे इंटरेक्शंस होते थे, क्लास डिस्कशंस होते थे. ऑल द मोर इट वाज अ गर्ल्स कॉलेज, सो I've always been in a co-ed, so initially it was quite annoying, but then I got my way out of this, and काफी interesting ये जर्नी होने लगी. तो ओवरऑल 3 साल के अंत तक आते आते फिर ये हुआ कि अब क्या किया जाए, अब तो आईएएस की तैयारी स्टार्ट करनी है. सो my mother and my elder sister were they kept poking me कि तुम जो है बहुत लफंडा टाइप हो, पढ़ाई लिखाई में ज्यादा मन नहीं लगता तुम्हारा, घूमती फिरती रहती हो, तो तुम्हें जो है नॉर्थ इंडिया नहीं रहना चाहिए, व्हाई डोंट यू गो टू साउथ इंडिया, और हमें लगता है कि तुम जर्नलिज्म वगैरह ज्यादा अच्छा कर लोगी. एंड बैक इन दोज डेज बरखा दत्त, आई थिंक शी वाज एट हर जेनिथ, तो शी यूज्ड टू लाइक रियली इंस्पायर मी. I can't say about the same as of now, but yes, back in those days, definitely. So मैंने IIMC और एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म का 3rd ईयर में एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया. एट द सेम टाइम मैंने DU फैकल्टी ऑफ लॉ का भी मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया. आई एम सो सॉरी आई मिस्ड ऑन समथिंग. 12वीं के बाद मैंने क्लैट का एग्जाम दिया था. हाँ, वही मैं एक्चुअली पूछने वाली थी. yes, एक yes, तो ये ह्यूमैनिटीज, ओके, यू टुक ह्यूमैनिटीज एंड इट वाज आउट ऑफ कन्वेंशन बिकॉज जनरली जो परसेंटेज अच्छी होती है तो साइंस लेना चाहिए. सो यू ब्रोक द कन्वेंशन व्हिच इज ग्रेट. So do you think that humanities actually played a role in this entire setup of law and everything? क्या मदद मिली आपको ग्रेजुएशन में? बिल्कुल बिल्कुल. मैं पर्सनली मुझे ऐसा महसूस होता है कि देखिए कोई बार नहीं है कि अगर आप लॉ कभी भी कर सकते हैं, जीवन के किसी भी पड़ाव पे कर सकते हैं, किसी भी बैकग्राउंड किसी भी सब्जेक्ट के साथ. बट आई पर्सनली फील कि ह्यूमैनिटीज लेके मेरा बेस बहुत ही स्ट्रांग हो गया था. और ये नहीं कि ग्रेजुएशन से, बट 11वीं 12वीं से आई बीन अ स्टूडेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज. सो दैट ओपनड अप माय पर्सपेक्टिव. आई स्टार्टेड बिकमिंग क्रिटिकल ऑफ थिंग्स. मैं चीजों को बहुत ही एक होलसम तरीके से देख पाती थी, जो मुझे लगता है मेरे लिए बहुत ही अच्छी लर्निंग साबित हुई. तो चूंकि बहुत एवेन्यूज नहीं पता थे, ये था कि इधर आई विल डू ग्रेजुएशन या फिर एक ऑप्शन लॉ था. और चूंकि मैं इलाहाबाद से हूँ, वहां पे इलाहाबाद हाई कोर्ट काफी प्रोमिनेंट हुआ करता था. तो प्लस आई डोंट हैव अ बैकग्राउंड, नोबडी इन माय फैमिली वाज इन लिटिगेशन. सो मेरे फादर का ये था कि वर्स्ट सिचुएशन में लिटिगेशन है, लेकिन तुम्हें जुडिशरी करना है या कुछ आईएएस करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी वगैरह तुम कर सकती हो. उन्होंने अपनी बेस्ट समझ के हिसाब से अपने कलीग से पूछ के मेरा क्लैट का एग्जाम भरवा दिया. एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा. मैंने बंक मारा 11th 12th. मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, जिस चीज का रिमोर्स मुझे शायद जीवन भर रहेगा, क्योंकि शायद मेरे 1 साल बच जाते, बट होनी को यही मंजूर था. दिस इज हाउ आई एक्सप्लेन इट टू माई सेल्फ. सो मैंने क्लैट का एंट्रेंस दिया. एंड आई थिंक मैं 3rd या 4th सेशन था जब क्लैट उसी टाइम से बिल्कुल से इट स्टार्टेड रोजिंग इनटू प्रोमिनेंस. 2008 में शुरू हुआ था. एब्सोल्युटली. सो आई थिंक मेरी 3,500 के आसपास कुछ रैंक आई थी और 2000 या 2200 में बंद हो गया था. तो मेरा हुआ नहीं. तो इवेंचुअली फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी एंट्रेंस मेरा निकल गया था, बीए का 5 इयर्स का, एलएलबी का निकल गया था, बीएचयू का निकल गया था. बट इवेंचुअली माय फादर एंड लाइक क्यूमुलेटिवली वी डिसाइडेड दैट आई विल बी हेडिंग टू दिल्ली यूनिवर्सिटी. यस. सो आई केम हियर. तो बस ये चीज, आई एम सो सॉरी, मिस आउट हो गया था. सो क्लैट जीवन का एक बहुत ही अच्छा एग्जामिनेशन था, बिकॉज वो चूंकि मैं पढ़ाई में ठीक ठाक रही हूँ और कभी फेलियर नहीं देखा था. तो एज सच क्लैट का एग्जाम ना लगने के बाद मुझे पहला वो स्लैप पड़ा था कि ओके, लेट्स गेट बैक टू द रियल वर्ल्ड. और यहाँ पे सिर्फ नंबर ही नहीं लाना होता है, फेलियर भी कहीं ना कहीं आपको बहुत चीजें सिखाते हैं. तो हैविंग सेड दैट, फिर मेरा ग्रेजुएशन वगैरह रहा. ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में आके मेरा पूरा रुझान हो गया था कि मैं जर्नलिज्म में जाऊंगी. और इनफैक्ट मेरा एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म जहाँ चेन्नई में जो है, उसकी मेरी काउंसलिंग की डेट थी. सब कुछ तैयारी हो चुकी थी कि मैं वहां जाऊंगी. बट इट जस्ट सो हैपेंड दैट जिस दिन मेरी काउंसलिंग थी, सेम डे मेरा लॉ फैकल्टी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन था. एंड घर में भी काफी इस तरीके का माहौल था कि 2 टीम्स डिवाइड हो रखी थी. माय फादर वाज एडमेंट कि दिल्ली छोड़ोगी तो यूपीएससी छूट जाएगा. एंड बैक इन माय माइंड मेरा डेफिनेटली तैयारी करने का मन था आईएएस का. तो मैंने उस चीज को छोड़ा एंड आई गिव माय एंट्रेंस. थैंकफुली आई गॉट एंट्रेंस का, मेरा एंट्रेंस क्लियर हो गया एंड आई चोज लॉ सेंटर 1.
Trust me, Nivedita, the best thing that has happened to me by far has been the admission and faculty of law at Delhi University. गार्गी कॉलेज ही नहीं, बट मुझे लगता है लॉ सबसे खूबसूरत चीज है जो मेरे जीवन में आई, और उसने मेरे पूरे व्यक्तित्व को बदल दिया. एक बेहद ही खूबसूरत डिसिप्लिन है, और मुझे लगता है कि कभी भी किसी को भी मौका मिले तो उसे जरूर पढ़ना चाहिए. और इसको बहुत समझ के मत पढ़िए, बिकॉज लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस. ऑफ कोर्स. और जैसे कि दिस इज द क्वेश्चन दैट आई फेस फ्रॉम मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स कि मैम अगर आईआईटी देना है या मेडिकल भी का भी मन है तो क्या क्लैट देना चाहिए? तो व्हाट डू यू से? आई मीन, आपको साइंस मिल सकती थी, आप कुछ भी कर सकती थी, यू वर अ ग्रेट स्टूडेंट, बट देन यू डिसाइडेड टू डू लॉ ऑन योर चॉइस कि भाई मुझे लॉ ही करना है, मुझे इसी ह्यूमैनिटीज के बैकग्राउंड में जाना है. And you're saying that it was one of the most beautiful experiences of your life, so you don't regret not becoming an Absolutely not. engineer or a Absolutely doctor. not. Exactly. I mean, looking back, that's the best decision I have made by far. मैं अभी भी अपने आप को उस चौराहे पर देखती हूँ जहाँ मेरे पास ऑप्शन था कि शायद मैं जर्नलिज्म में जा सकती हूँ. I don't intend to demean any other profession, but given a choice, आज जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है I think I made a fine decision for myself, क्योंकि मैं हो सकता है वहां पे भी एक्सेल करती, बट इसके साथ मैं ज्यादा तारुफ रख पाती हूँ, तो मुझे इसलिए ये डिसिप्लिन ज्यादा खूबसूरत लगती है. और जो एक सबसे बड़ा स्पेशली लिटिगेशन में आने के बाद जो मैंने सबसे बड़ा एक बदलाव देखा, वो ये था कि जो भी चीजें मैं थ्योरी में पढ़ रही थी उनको मैं कैसे एक्चुअली प्रैक्टिकली अप्लाई कर पा रही हूँ. सो दैट वाज वेरी एम्पावरिंग टू मी. सो लिटिगेशन का सफर तो खैर बाद में आया. तो इसी तरीके से मेरा 3 साल बड़ा ही अच्छा बीता, चूंकि मैं को करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह में इन्वॉल्व रही हूँ, तो आई वाज द जॉइंट सेक्रेटरी, इलेक्शन वगैरह लड़ा, अच्छे कॉन्टैक्ट्स रहे, एक्सपोजर मिला. फिर से बहुत सालों बाद जो है कोएड में पढ़ी, सो यू नो इट वाज गुड फन, लड़कों का अटेंशन मिलना एंड ऑल दोस थिंग्स. सो मजा आया, बहुत ही अच्छा. ऊपर से नॉर्थ कैंपस में रहते हैं, तो नॉर्थ कैंपस की तो अपनी ही बात है, और दिन दोपहरी शाम कैसे बीत जाती है पता ही नहीं चलता था, चाय और अल्लड़बाजी करते हुए. बट आई जस्ट मेड श्योर. एक सेकंड प्रज्ञा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है. संजय, आई विल टेल यू, मैथ्स इम्पोर्टेंट नहीं है, मैथ्स क्लैट के लिए इम्पोर्टेंट है टू एन एक्सटेंट कि वो जितनी एग्जाम में आती है. अगर आप लॉ को एज ए सब्जेक्ट, इफ यू चूज लॉ, इट इज नॉट एज इम्पोर्टेंट, राइट? तो बस उतनी ही तैयारी करिए. अगर आप मैथ्स में बहुत अच्छे नहीं हैं तो आप उतनी तैयारी करिए कि आप बेसिक मैथ्स को यूज कर सकें, जो कि 9th-10th में होती है. 9th और 10th की मैक्सिमम मैथ्स आती है, बस उससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती है. अच्छा, मैं आई वुड लाइक टू आस्क यू, ये लिटिगेशन की शुरुआत आपने कौन से कोर्ट से की दिल्ली में? हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस? सो I actually started with Supreme Court and then I went to the District Court. ये भी बहुत ही अच्छा पड़ाव रहा है. लोग usually District Court से start करते, then they go to the High Court, then they go to the Supreme Court. But I actually started with Supreme Court. I was fortunate enough to work with one of the most coveted human rights lawyer in India. And I worked with him for fairly like 8 to 9 months, and that was a great learning to me. मुझे लगता है सीनियर्स के साथ कभी ना कभी आपको मौका मिले तो आपको अवश्य काम करना चाहिए, क्योंकि आई एम नॉट सेइंग कि वो सारी आपको जो है विधि कला सिखा देंगे, बट एट द सेम टाइम उनका जो तजुर्बा है वो आपके बहुत काम आएगा. बहुत छोटी छोटी चीजें आप उनसे पिकअप कर सकते हैं. आप उनके साथ गाड़ी में कोर्ट जा रहे हैं और वो आपको कुछ रैंडमली ऐसी ज्ञान की बात बता देंगे विच यू विल फील दैट यू नो इट इज लाइफ टर्निंग, लाइफ चेंजिंग. तो डॉक्टर कॉलिन गुंसाल्विस हैं, उनके साथ मैंने काम किया, एंड ही इज अ ह्यूमन राइट्स स्पेशलिस्ट, और उन्होंने काफी अच्छी चीजें सिखाई. और चूंकि ये राइट्स बेस्ड लिटिगेशन में थी, क्योंकि उससे पहले मैं एक एनजीओ के साथ काम कर रही थी, पारस इंडिया, और इसलिए मुझे एक्सेस मिला हुआ था तिहाड़ जेल में. जेल नंबर 6 है जो कि महिला कैदियों का जेल है, वहां पे मैं लीगल काउंसलर थी. इनफैक्ट मैं अभी भी हूँ वहां पे. तो वो भी मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर था, क्योंकि दीवार के उस पार एक्चुअली क्या चीजें होती हैं वो लोग ऐसे नहीं समझ पाते. तो कहीं ना कहीं मेरा रुझान एक ह्यूमन राइट्स के प्रति होने लगा. तो सर के साथ काफी कुछ चीजें सीखने को मिली, बट वो जैसा कि कहते हैं कि आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम यू रियलाइज दैट यू नो नाउ इज द टाइम वेयर यू शुड प्रॉब्ली मूव ऑन. तो जीवन चलने का नाम है. सो आई स्टार्टेड इंडिपेंडेंटली आफ्टर दैट, एंड इन फैक्ट मी एंड माय पार्टनर वी हैड द सेम फर्म. सो हमने नई फर्म एस्टैब्लिश की और मैंने इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया.
तो लिटिगेशन मैंने सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट की, और मुझे एक वाकया याद है जो मैं अक्सर इस चीज का जिक्र करती हूँ। जो मेरा पहला दिन था लिटिगेशन का, मुझे बोला कि मेंशनिंग करनी है आपको, और चीफ जस्टिस का कोर्ट था, 3 जज बेंच थी, और मेरे को वकालत का भी नहीं आता था, मुझे पता नहीं थी कि मेंशनिंग क्या होती है। तो कुछ जब नहीं समझ आया तो जो है वहां ऑफिस के क्लर्क भैया जो थे उनको मैंने पकड़ा, उनको मैंने बोला भाई बता दीजिए क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि कोई अगर अर्जेंट मैटर आपको लगवाना है जजेस के सामने तो आप मेंशनिंग करते हैं। सो आई रिमेम्बर जस्टिस दीपक मिश्रा थे और जस्टिस खनविलकर थे, जस्टिस चंद्रचूड़ थे, उनके सामने मैंने बड़ी बेंच के सामने आपने बोला अपना पहला फर्स्ट डे और मैं मेंशनिंग करने गई। एक्चुअली मुझे स्ट्रेस इन तीनों का नहीं था, मुझे स्ट्रेस अपने बॉस का था जो मेरे पीछे खड़ा था। मैं उनको बार बार बोलती रही कि सर मैंने आज तक कभी लिटिगेशन नहीं किया, मुझे नहीं पता, मुझे डर लग रहा है। एंड ऑल ही टोल्ड मी वाज कि आई डोंट गिव अ डैम, तुमको बोलना है जाके मेंशन करके आओ। आई वाज ट्रेम्बलिंग, आई कुड हियर माय हार्ट पाउंडिंग और all sort of emotions at that time. I don't remember. All I remember, मैंने रात भर जो है practice की. My lords, I have to mention a matter. Item number is this, and I don't know. It just got mixed up. All I could hear was my heartbeat in the morning, and suddenly Justice Mishra said, "No, no, no, not allowed." I was disheartened. I was heartbroken. I was like, मैं किसी काम की नहीं हूँ, कुछ नहीं हो सकता. And then I turned back and I looked at my boss, and all I said was कि मैंने आपको पहले कहा था, आपको मुझे नहीं यहाँ भेजना चाहिए था. But I think वो बहुत एक important moment था. उन्होंने मुझे कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम कल I'm really sorry to interrupt you, but you know there are some students, some of my students are from South, and okay, they they need would want me to speak English in English. also. Yes, I'm so sorry. I'm so sorry. that's okay. Yeah, so I think Abhishek cured your problem. She'll tell you what she's saying. Don't worry. You don't need AP to translate. yeah. If would you want to translate for me, you can do that. So basically, what Abhishek, what ma'am is telling is that she started practicing in the Supreme Court, and the first day when she approached the court, the bench was, you know, the bench consisted of the mighty judges. There was Chief Justice Deepak Mishra, then Khanvilkar and Chandrachud, the mighty judges of India. And when she presented her first case, it was a bad day, so she thought that she's of no use and And then I went to my litigation. boss and I told him that you shouldn't have sent me to Supreme Court directly. You know, I deserve worse than district court also. And I never looked up to like going to district court. Yeah, district court, so we will manage. He was like, no, I don't care. Go again tomorrow and you're going to mention. So, you know, I was at that point of time that, okay, fine, I have to adhere to what my boss is saying. So next day I went. Thankfully, my mentioning was allowed. And it suddenly, you know, gave me a lot of confidence. And I realized that now nobody and nothing can stop me. But I realized that since the opportunity to argue in Supreme Court is comparatively quite less because you don't get a lot of time to speak, plus a little bit face value is also there. I was quite young and new. So I thought that, you know, I should probably put my hands in district court also, or Delhi High Court also, since I have a license to practice across all the courts in Delhi. So I told my boss that I would like to take up matters of district court. And once I started going there, I realized initially, since I am from UP, so, you know, I think it was all because of the confidence game. I used to think that my English is not good, and I would still say that it's not amazing. My grammar is not too good, but decent enough to, you know, like manage things. People understand. Yeah, yes, that is all that matters. Absolutely. And if you're making your points correctly and if you're thorough with the file, then, you know, things become easy for you. So I went to the district court, and there I started, you know, like my confidence started enhancing. And I got more time to argue, and my oratory skills were getting better. So, and then I started getting independent matters also. So I touched upon different tribunals also. I did a couple of matters in NGT and the Central Administrative Tribunal. So when it took probably 3 to 4 months to understand. And since I have always been a very inquisitive kid, I like before going into litigation for 10 days, like squarely, for 10 days, I used to just observe things. Where is the registrar code? What does a clerk do? What is an affidavit? All these basic technical things. I was never ashamed of holding a file for my boss, or, you know, like just going there and making like a poker face as if you don't know anything. But all these things I was absorbing eventually. And for the first time when I did my independent matter and I got a favorable order, nothing can beat that moment of happiness. The moment of victory, of course. So did this college or not
clearing CLAT, not being a part of a national university, did it affect like any moment of your life? No, nothing Do you think can stop me. of course, nothing can stop you. I know that. But do you think something could have changed, or you might have ended up at a different place if you were a national university student? Do you ever go back there and think about it? Nivedita, honestly speaking, I don't know about the current scenario because I definitely feel, despite teaching in one of the most coveted law schools, I believe that somehow there is some sort of discrimination between the 3 years law school and the 5 year law school, and I'll be utmost honest about it. But trust me, the best learnings have been at the Faculty of Law. Those 3 years of my But college life, that is a because the different. professors who whose books are prescribed in the national law school, I was fortunate enough to directly study from them. Right. So they've given us an experience for life. Nothing is an impediment. Somebody from, with, like, no offenses to students who come from CCS Meerut, because they usually say that the classes are not too regular, but Mhm. still student who have not been very regular in 3 years of their law school have also are also at very prominent position as of now. So at the end of the day, I reiterate this. I believe that everything is in the mind. It's Right. all in the mind. There's nothing that can stop you if you've decided upon something. Exactly. So it's such a beautiful thing to say, Smita. Like ma'am said, NLU, of course, college does play a significant role Of in your course. life. It shapes your journey. It decides your course, future course, what you want to do, how you wish to do it. But then college is not the only thing that would determine कि आपने आगे कैसे बढ़ना है. बहुत कुछ आपकी खुद की मेहनत पे भी डिपेंड करता है. बहुत, चलिए एनएलयू से बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वहां पे भी सरवाइव करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी. वो भी एक अलग कहानी है. बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने पढ़ा नहीं है 5 साल के लॉ स्कूल में, इसलिए मैं, मेरा ये कहना कि नहीं एनएलएस बेटर है कि लॉ स्कूल बेटर है, 3 years लॉ स्कूल बेटर है, वो गलत होगा. मुझे लगता है कोई कहीं पर भी पढ़े, लॉ की डिग्री अगर आप ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, if you know what you've read, I think that would suffice, and star, yeah, you would land so among the stars. Aditya wants to ask whether, since you're a female, litigation is mostly male dominant. You cannot deny this fact, like nobody can. You have a problem? Did you, when you started? Never in Supreme Court, never in High Court, but yes, there have been instances at District Court. Quite hilarious, quite irritating, quite demeaning sometimes, if not directly, but sexual innuendos or sexist remarks or jibs, which can infuriate you in the middle of the proceedings. Like, I remember I was supporting the PP in a matter where a bride was burnt alive, and like within 3 months of her marriage she was burnt alive. So the father, I think there was cross examination that was going on, and it was T Hazari court in the north district of Delhi, and there was a group of hooligan lawyers, I would say, who was the commander in chief lawyer happened to be a very prominent face in that particular district court. Let's not take names. No, I'm not going to do that, of course, with all due respect to all my colleagues. You see, these are all techniques to maneuver, to manipulate, to pull the other party down, which at the beginning of the profession probably it might infuriate you. At the end of the day, you start accepting things that these are norms, and I'm not saying these are norms, but people try to pull you down by saying different things. तो वो एक बहुत ही कॉमन, उन्होंने एक बहुत नॉर्मल सी चीज बोली, अरे लड़की हैं आप क्रिमिनल मैटर कर रही हैं, अरे ये क्या है, ये सब नहीं होता है, वो नहीं होता, अरे मैडम हमारी भी सुन लीजिए. All those type of weird things sometimes happen. Or sometimes they used to, like, if you are presentable, if you put on a decent bright lipstick, then ये तो ऐसे सुंदर बन के आ जाती हैं सीनियर्स की, वो जूनियर्स बन जाते हैं. So if you are a well spoken, well behaved woman, doing decently well in your profession, so people would always say about things, but these things are just drop in the ocean. Nothing can stop you. Of course, if you want to do something, these are just And minor you have to be iron willed when you go into court litigation, because financially it's not a very sound profession, like in the initial years. So you can be put down at so many instances. Your seniors can probably just throw files on your face, they may humiliate you in front of the whole court, but just become absolutely stubborn and deep, because when you want to learn, you want to learn.
And when Correct. you look back, you'll feel that all these things will eventually make a string of pearls for you, and you'll recall these moments and you'll feel that, yes, this moment was decisive and it has played a very important role in my life and in enhancing my personality. Right. So that's the So, thing. yeah, the answer to your question is that it is not hard to survive in any profession if you decide to profess it. ठीक है, कोई भी प्रोफेशन मुश्किल नहीं है. लिटिगेशन ऐसे सुनने में लगता है लिटिगेशन हो, अकेले कैसे शुरू करेंगे ये और वो, लेकिन करने वाले कर जाते हैं, सब अकेले ही करते हैं और बहुत आगे भी बढ़ जाते हैं. मैम एक एग्जाम्पल है इस चीज का. अच्छा स्मिता, आपके क्वेश्चन के जवाब मैं दे दूं. बच्चे 3 years का जो लॉ है वो ग्रेजुएशन के बाद होता है. 12th के बाद सिर्फ 5 years का लॉ ही होता है. इंटीग्रेटेड LLB होती है, चाहे वो BSc के साथ हो, चाहे वो BA के साथ हो, चाहे आजकल तो there are different kinds of laws, BBA law, BA law, BA तो law है ही, BBA, BTech and whatnot. So yes, after 12th you do an integrated course, but if you are already a graduate, you do this 3-year LLB, which is not provided everywhere, mostly in central universities. None of the NLUs provide for that degree. Okay, so Yash Bharadwaj wants to ask you the role of ethics in litigation. It's very personal. It's a beautiful question. We have a paper of ethics, paper 4 in UPSC also. So be it bureaucracy, be it judiciary, it is expected out of you to have certain morality, certain ethics intact in you. I don't know by far how much I've been able to carry it gracefully with me, but since it's still like I'm in the initial years of my practice, though I'm not practicing right now, but I feel ethics do play a very important role, especially with my stint outside the country. And since I've seen Supreme Court and other courts in UK, I saw that, even if at the stage where counsel is at this final stage of argument and the counsel gets to know that the client has done the mischief which was hidden, they would leave the matter. They would, just outrightly leave it. And since I've done a lot of matters pro bono initially, वो एक जो वकालत का नाम खराब है, कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि वकील के पास भगवान ना करे जाने की जरूरत पड़े. So we have been कहीं ना कहीं responsible for this thing, the previous generation or the generation. See, you have to be devil's advocate. You cannot choose sides. You cannot, you have to choose sides. And even if there's a murderer, the law is simple that everyone should be given a fair trial and a fair hearing. To decide what is right and absolutely, to decide what is right and wrong is the duty of a judge. You are simply doing your job as an advocate. So in our professional endeavors, there might be chances that, we are not coming up exclusively for somebody जिसका हमें पता है कि उसने गलत किया है. But still, it doesn't make you a bad person. When we talk about ethics, I believe that ethics का role सबसे important इस चीज में आता है कि आप पैसा ले रहे हैं तो आप कोर्ट में डेट पर टर्न अप होएं, आप जो है अपने क्लाइंट से कनेक्शन में बना के उनसे कांटेक्ट करके रखें. दे आर कॉलिंग यू relentlessly, like everyone comes with a baggage or a trouble, so they're already quite vulnerable, and we should not further exploit them. So I try at my best कि अभी तो एटलीस्ट मैं ये चीज ना करूं. बाकी आगे देखते हैं क्या होता है. Money corrupts, but I understand that at later stages you get quite busy और आपको नहीं समय मिल पाता है, but still at least don't make false promises. So that's the thing. Yeah. So another beautiful question by Amrendra Panda, and it's a very mature question. How do you see the future of law graduates in India in the next few years? Wow. Quite deep, actually. Actually, I think this profession, especially from last 15 years, have the trajectory has been quite good. People are now, initially people, they did not wanted to go for litigation, or it was not seen as a good discipline. That sort of mentality was there कि अगर लड़की है तो वकालत नहीं पढ़ना चाहिए वरना शादी नहीं हो पाती. She knows everything, it would not be good for her. या वकील जो होते हैं वो गुंडे होते हैं, they exploit all sort of thing. But ever since we've started having national law schools, in a way this has become quite elite, and it is almost at the same. exactly. Yes. So you see, we have IITs, we have NITs, we have NSD. All these things are there. So somewhat, law has become a very hot subject, which a lot of people want to adopt, because in one way this is a professional degree.
So back in mind, that God forbidden, if I'm trying my hands on other things and I'm not able to make it, at least I have this profession secure in my hand. And कुछ नहीं होगा तो चलो झोला उठा के वकालत कर लेंगे. Although ये भी मानसिकता गलत है, because let me tell you, वकालत may sound to be very easy, but वकालत is not. It's very challenging. It's very tough, and you have to be really thick-skinned अगर आपको core litigation में जाना है. Can't say about other things, corporate वगैरह. Yes. So I believe that law graduates are change makers in the times to come. In whatever profession they go, be it they're like in whether they are in judiciary, whether they go in whether they opt optional as law for bureaucracy, or they are practicing advocates, or they go into corporate. Anyone who's aware and acquainted with the laws of the country is most likely not to get involved in the mischief, would in fact, come out of the mischief very easily. And I believe that it makes you a better human, and that sort of service for the society keeps harboring in your mind. So I think the future is pretty bright for anyone who chooses to learn law in their life. Right. Okay, so another thing is that you just admitted that you come from a very humble family. Nothing was too great. I mean, it was a good family, but it was not a very upper middle class or anything. But you still managed to pursue your master's from the most, what should I say, the best universities of the world. Cambridge, you are a Cambridge pass out. How did you do it? I mean, please enlighten my students on the experience. How was the experience? How did you get it and everything? I think my parents have always, or my family for that matter, has always been a great support to me. And I come from a very well-read family where I've grown up watching both my parents, like discussing, debating, and talking about good things all the time. So they used to keep telling me that, LLB is not just the last degree you should look forward to, and try to have more degrees. I'm not saying that even if you are in core litigation, and a lot of people say that LLM is not required, if you have to practice, LLB would suffice. But they were like that learning another degree is never a loss. So, and my father was very clear about that, so now that you've had all the degrees from India, if at all you plan to do a master's degree, make sure you do it from abroad. But since I got married, he just wanted me to have a foreign exposure probably. So he said that it would be nicer if you see the world around, because we get cocooned once we start living at a place. We feel that we are the best, this and that. So he always said that your intention should be always to come back to your country and serve here, but make sure that if you learn something from other country, that would not be there should not be a loss. And he has always been very clear about one thing, that I would not be able to pay for donations, but if you make it to some nice place, I'll try my level best to help and support you. So since I was quite young into litigation, I would not say that I had secured a lot of money. So I had literally borrowed. Okay, so that's just a small story. So since 3-4 years into litigation, I used to crave that I believe that I should still, go for one more degree. And I felt that sense of incompleteness in me. So I always wanted to do a master's degree. And I was also very clear about the fact that since it's a huge amount, you can get a master's degree from anywhere in the country. There are a hell lot of law colleges, not just in our country, but abroad also. But since I knew that I don't come from a very thriving background and money can be an impediment, so I was clear that it has to be an Ivy League college. One very important thing that I would like to tell you all, if at all anybody amongst you is planning for LLM abroad, especially if you're targeting an Ivy college, you have to remember that nothing matters, no matter how good you are in curricular activities, but you have to be very consistent with your scores. I've been a gold medalist throughout. I've always been one amongst the top scorers, and I have topped that law faculty endless times. And because of that consistency of scores, I believe my application was chosen. Not just your, the statement of purpose or the CV. Even if you get a CV of Prime Minister of India, they are not taking one-on-one interviews. All they are looking is the application that you have sent. So your CV, your work experience, and beyond everything, a consistent score. And Ivy League colleges, if you are in a 3 years law school, expect you to get a first division, more than 60%. And if you are in a national law school, more than 75%, 70 to 75%. So that's the basic that they expect you. And there's no compromise, be it Harvard, Yale, Oxford, Cambridge, LSE, and all these colleges.
So since I was very good with my marks and I had secured 65% aggregate in my law faculty, so I thought that time is probably opportune with my 2-3 years of practice. I secured a little bit amount of money, and I felt that maybe I should just try my hands on getting a degree from abroad. So I applied for LLM, and I was fortunate enough to. The only university where I applied was Cambridge, because it was just in the a split of seconds that I thought कि चलो try करते हैं, अभी 10 दिन बचे हुए application भरने में. So I filled the application. Unfortunately, बस एक एप्लीकेशन भरनी होती है. So yes, guys, it's a very there is no detailed exam. application form, and please never experiment like I did, because I took like 15 days to fill this application form. It's the applications are usually out in July, because the new semester starts from the 1st of October, which is the Michaelmas, and it's their new session. So you get like good 2-3 months to prepare, and then you have IELTS or TOEFL to clear, and then you have to get transcripts of your degrees, and then a lot of things are there. So all these things might take a lot of time. Beyond everything, the statement of purpose is something that should be very personalized, and it tells a lot about you, because they've not seen you. They're going to read you and judge you on behalf of that. So that will take a little time. So I think my writing skills were pretty decent, and I could write down and I could express myself through that application. But that was the only university where I applied, and I got an offer from Cambridge. One of the reasons could be because my practice was well decent, especially in the human rights ka area, and my CV was also decent. I had exposure with litigation and I'd worked with an NGO. So I think in totality, that made a decent application. However, the only problem was that I could not secure a scholarship because the deadlines were over. There was just one scholarship interview for which I had to go to Bombay. But unfortunately, last year, it wasn't given to any law student. It was the INLAC scholarship. So I could not make it. But still, that's not a problem. So I literally had to beg, borrow, steal, and my family, my partner, everyone really came forward and they helped me a lot. And I would be quite honest, I had to put my gold jewelry of my wedding on collateral. And I want to tell you all, because there were a lot of people who were saying that पढ़ाई का degree इतना जरूरी नहीं होता है, that you are like putting everything in it. But I knew that I'm taking a risk after 4 years of litigation, having a back end office, having juniors, having a almost settled life. But I thought that no, I have to take chance. Risk hai to ishq hai. It's a beautiful line from a scam 1992. So I am a ardent believer of that. I think you should take risks. So I went to, like, just 1 week before my Cambridge session was about to commence. I could get my visa and just borrowed money here, there, everywhere, and went there. Eventually it happened. It was in your destiny. Smita, the answer to your question is, आप इतना persistent मत होइए. पहले तो आपके सवाल का जवाब आएगा जब आना होगा, ठीक है? आप फ्री में कहीं पढ़ाई नहीं कर सकते. आपका ये सवाल बहुत relevant है. You cannot study in any college for free. What you can do is apply for scholarships. If you're fortunate enough कि आपको scholarship मिल जाए, तो शायद आपका burden थोड़ा कम हो सकता है. Tuition fees reimburse हो जाती है, waive off हो जाती है, but there are certain expenses that you'll have to bear. Exactly, free में नहीं पढ़ते आप, ठीक है? और दूसरी बात ये कि ये आपकी मास्टर्स की डिग्री इतनी ज्यादा prominent college से, is it helping you anywhere in, like, are you practicing right now? No, I'm not practicing. I'm assistant professor at OP Jindal University. So since I was the COVID batch in the year 2019, and unfortunately, since it was a 9 months course, and just after like 5 months, there was COVID last year. So, the entire world stopped and everything came to a grinding halt. So thankfully, OP Jindal came for recruitment last year itself. So the first thing that was in my mind, since I did not have a scholarship, so I really wanted to secure something in my hand. So I got through the job offer. So I knew that back in my country, at least I have this thing in my hand. I was definitely applying at other avenues, but the market was completely crashed. There was nothing. I had a lot of colleagues who had degrees from the best of the best universities, PhDs, MPhils, even they were not having any jobs. So I felt that the time is opportune, and
litigation was also not going very well. And I'll be very honest, at this point of time, since I had a lot of game of loans to play, I thought that let me join this university. Plus I definitely have a niche towards teaching. I enjoy teaching very much. So I joined Jindal once I came back to India last year in August, and it has been a great experience by far. Definitely, I miss litigation, but teaching young mind, young students, and interacting with them, it's a mutual learning, and Yeah, it's actually a great experience. Absolutely. I can tell it from my personal experience also. Yeah. Okay, so Rabneesh, IELTS is compulsory for any foreign university. You have to assure them that you will be able to adjust in their language, which is English, So right? you So see, that's the irony, that if any foreigner has to come to India, they don't they have don't to have to learn take any exam. Devanagari. But Exactly. I am the best in litigation. Cambridge University has chosen me. They've chosen my application. But just because I have to go to another country, I have to prove that I know basic of English. Wherein like 15 years of my life I've given into this particular stream. So it's quite discriminatory. But this is how it is. I gave TOEFL thrice, by the way. I never, since I was doing litigation also, I never thought it can be like so trivial yet so important, because I hardly used to get time. I was like, itni Angrezi to aati hai ki nikal jayega. But they have certain patterns and they expect you to write only that. No brainer, nothing doing, no creativity of any sort. There's a set pattern, you're expected to write in that. So please, there are certain tutorials on YouTube. Do watch it and bang on. You'll get a very good score. So that's not a problem. And IELTS, TOEFL, GRE, it is an option. Depends from country to country, and you have to do that. So for Cambridge, they expected 7 in each band, that is listening, writing, reading, and speaking, and overall a band of 7.5 out of 10. Usually, a lot of universities just take like 6.5 out of 10, but for Ivy League colleges, it's pretty high. So it's almost like 7.5 on a scale of 10. So yes, I could manage it, and I could prove that yes, I am decent enough in English, being an Asian, कि मैं उनकी country में survive कर लूँगी. Right. So मेरे स्टूडेंट्स पूछना जानना चाहते हैं कि क्या यूपीएससी देंगे अब आप? Okay, so I could not clear UPSC, and it has played a very important role in my life. I could not clear examination because of many reasons, which I would not like to say at this point of time. So many responsibilities, and I would say probably I was not decently focused in UPSC. अभी तो मेरी उम्र भी नहीं allow करती है, मैं 31 साल के होने वाली हूँ, तो मेरा वो जा चुका है. But I think I'm very happy with what I'm doing. The day I decided कि अब मुझे यूपीएससी की, मैंने almost 2-2.5 साल तैयारी की, but जिस point पे मुझे समझ आया कि probably I'm not meant for this thing. शायद मुझे बोलना, पब्लिक स्पीकिंग, लोगों से मिलना, सोशल सर्विस, इन सब चीजों में जाना ज्यादा पसंद है, या मुझे वकालत ज्यादा रास आ रही है. उस दिन मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा. पर लिटिगेशन में मेरी जो इतनी स्ट्रॉन्ग एक ग्राउंड बनी स्टार्टिंग के ईयर्स में भी, उसका कारण ये था दैट आई वाज वेरी थरो विद एनसीईआरटीज. I knew, or trust me, 12वीं तक की NCERTs, as boring as they may look, as bland as they may look, they are great source of information. So if you are, well read with NCERTs, I think you won half of the battle. I was thorough with CPC, I was thorough with CRPC. भले मुझे नहीं पता कि कोर्ट में एफिडेविट क्या होता है या ये क्या होता है, बट मैंने थ्योरेटिकली उन चीजों को पढ़ा हुआ था. तो जब आप थ्योरी के ऊपर जब आप प्रैक्टिस बिल्ड ऑन करते हैं, तो वहां पे आपको हमेशा एज मिलता है. So to your question, I'm debarred to appear because of my age, but if given an opportunity also, I think I would not go again for UPSC. But you all should do, and you all should work very hard. Right. So judiciary, UPSC, all are options. I mean, अब क्लैट देना है कि DU-LLB देना है, ये तो डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे. अगर आपको लगता है कि आप 5 साल का क्लैट देना चाहते हैं तो दीजिए, ठीक है, जो कि आपके लिए ज्यादा एवेन्यूज ओपन कर देता है ऑब्वियसली. और इफ यू रियली थिंक दैट यू वांट टू गो फॉर अ डिफरेंट कोर्स एंड देन यू वांट टू गो फॉर law afterwards, then it is a matter of personal choice, right? So thank you so much, Pragya. It was a wonderful session. Likewise. Right, and thank you so much, guys, for being with us, and I hope you enjoyed our chatty interaction with Pragya ma'am. Yes, and if anybody wants to get connected with me, I am available on LinkedIn and Twitter. So my Twitter handle is @Parijat Pragya, and you can type my name, Pragya Parijat Singh, on LinkedIn, and we can connect there. You can ask me any question, and I'll be more than happy to help.
or else Nivedita ma'am is there. She'll cater to all your needs. Questions related to scholarship in Cambridge will be asked from her and not me, because I haven't done my master's from Cambridge, right? So thank you so much, guys, and thank you so much, Pragya. Good night, everyone. Take care. Bye, guys. Bye. Thanks a lot. Bye.